Here, today we are going to see remaining part from chemotherapy, that is treatment of helminthiasis. So, and anthelmentic drugs, those drugs which are used to treat the anthelmentic drugs are the drug which will remove your worms or helminthiasis. Infections of worms, various kind of worms, they are known as a helminthiasis, and drug which will relieve or drug which will kill these helminths, they are known as anthelmentic drugs. So this we'll discuss in very short. So there are different kind of infections of worms. There are three kinds of worms, or there are three kinds of germs. You may say germs in the intestine. First one is first one is known as a nematodes. First one is known as nematodes. Nematodes, they are round in the shape. उनका जो शेप होता है वो राउंड होता है. फॉर एग्जाम्पल हुक वर्म, राउंड वर्म, पिन वर्म, whipworm, and strong Cercolis, then Bancroft's filaria. So these are known as a nematodes. Nematodes बोलते हैं उनको. ये सब जो है hookworms, roundworm, pinworm, whipworm, then strong Stercoralis, then Bancroft filaria. So these are known as nematodes. Then second, those which have a flat shape, they are known as a cystodes. They are known as cystodes. For example, tapeworm, beefworm, porkworm, dwarfworm, fishworm, and granulosus worm. So these are the cystodes. These are known as nematodes. These are the cystodes. Now third category of worms, those usually uh, those usually infect your intestine. जो बचपन में देखा होगा आपने, बहुत अगर कोई बच्चा शुगर वगैरह खाता है तो उसके इंटेस्टाइन में वर्म्स होते हैं, और जब वो टॉयलेट करता है तो उसमें वर्म्स, उसको बोलते हैं हेलमिंथियस. हेलमिंथ्स, worms means helminths. So third type of your worms, they are nothing but the flukes. They are also known as trematodes. They are having fluke-like structure. They are intestinal flukes, lung fluke, liver fluke, blood fluke. So basically these are the classification of different helminths or different worms. Those affect normally to the humans. Okay. So they are, first one is a nematodes, second one is a cystodes, and third one is a trematodes. Now we'll see quickly the pharmacology of them. See, you have to remember this. See, अपना जो ह्यूमंस में होता है, जैसे आपका नर्वस सिस्टम होता है कि नर्वस सिस्टम में एड्रेनर्जिक कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम होता है, गैबार्जिक न्यूरॉन्स होते हैं ब्रेन में, ठीक है. ठीक उसी तरह का भी सिस्टम वर्म्स में भी होता है. वर्म्स में भी लोकोमोशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उनके उनके पास भी मसल्स होते हैं. मसल्स मतलब अपने इतने बड़े बड़े नहीं होते, लेकिन उनके जो भी उनका लेंथ है उसमें मस्कुलर होता है, मसल्स भी होते हैं. सो यूजिंग दोज मसल्स दे यूज टू एंटेंगल, they used to entangle in the intestine. Okay. And these muscles, their muscles are also supplied with the nerves. कि ब्रेन में उनका नर्व्स भी आता है. वो नर्व जो होते हैं वो होते हैं कोलिनर्जिक नर्व्स, गैबार्जिक नर्व्स. ठीक है. तो नॉर्मली क्या होता है कि ह्यूमंस में नर्व होते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, उसमें सिर्फ अपना एसिटिल कोलिन का न्यूरॉन्स होता है, मतलब कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होता है वहाँ पे. और वहाँ पे क्या होता है कि ह्यूमंस में न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है, एनएम टाइप का, एनएम और एनएम टाइप के निकोटिनिक रिसेप्टर्स होते हैं. ठीक है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. और ये जो वर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें उनका जो मसल्स है वो मूव करते हैं, तो वो मसल को जो नर्वस सप्लाई आता है, तो वो सप्लाई में उनका कोलिनर्जिक नर्व होता है, एसिटिल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर होता है. कभी कभी गैबार्जिक भी होता है, मतलब गैमा अमोनोपिट्रिक एसिड भी कभी कभी न्यूरोट्रांसमीटर वहाँ पे आ जाता है. तो आपको बाकी फिजियोलॉजी आई थिंक आई हैव कवर्ड इन द कोलिनर्जिक नर्व सिस्टम. देखो एसिटिल कोलिन जब रिएक्ट जाके कंबाइन होगा मस्कर्निक या न्यूकोटिनिक रिसेप्टर पे मसल के, तो वहाँ पे क्या करेगा, डीपोलराइजेशन करेगा. डीपोलराइजेशन करने के बाद क्या होता है कि मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये इट इज जस्ट अ फिजियोलॉजी बिहाइंड द हाउ ए वर्म विल मूव, कि कैसे वो मूव करता है इंटेस्टाइन में. नाउ विल सी द फार्माकोलॉजी. So chemotherapy of helminthiasis. Helminth means worms, and infection of helminth means helminthiasis. Okay, there are different worms as I told you. Then anthelmentic drugs. What do you mean by anthelmentic drug? So these are the drugs which will remove the helminthiasis. So they either may be vermicidal. If they are able to kill the worms, they are known as a vermicidal. If they are able to expel them off from intestine, कि इंटेस्टाइन के बाहर निकाल देंगे उसको ड्रग्स, तो उसको बोलते हैं वर्मीफ्लू.
So those drugs which will kill the worms, they are known as a vermicidal, and those which will expel the worms from your intestine, they are known as a vermipure. In short, I have summarized this. Okay, so I'm not going to take in the detail. इसके ऊपर कभी क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. एक आधा क्वेश्चन आ गया तो आ सकता है, नहीं तो आ नहीं सकता. ठीक है. So first drug is known as levamisole. 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 Okay. First drug is known as levamisole, and it is the available as a racemic mixture. It is a racemic mixture of L-tetramisole and D-tetramisole. So this anthelmentic levamisole is a racemic mixture. ये दो उसका आइसोमर्स होता है, L टेट्रामिसोल और D टेट्रामिसोल, वो दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में होता है बिकॉज इट इज अवेलेबल एज अ racemic mixture. नाउ ये एक्ट कहाँ पे होता है, उसका साइट क्या है, साइट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन. सो दिस levamisole will act on a neuromuscular transmission of the worm. ओके, जो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन होता है वर्म्स का, नॉट अ ह्यूमन. अगर ह्यूमन में करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट आएगा. तो देयर आर सर्टेन डिफरेंस बिटवीन the physiology of your worms and humans. So that's why these drug can selectively act on a worms, not a human. So neuromuscular transmission, they will act as a ganglionic nicotinic acetylcholine receptor. Okay, they will act as agonist to the ganglionic nicotinic acetylcholine receptor. So agonist करेंगे मतलब क्या करेंगे, तो वो डिपोलराइजेशन कर देंगे. वहाँ पे डिपोलराइजेशन कर देंगे मतलब वो कंटिन्यूसली डिपोलराइज करते रहते हैं. डिपोलराइजेशन होने के बाद क्या होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है. ये कंटिन्यूसली डिपोलराइजेशन करते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन. ठीक है, तो हाइपर पोलराइजेशन होने के बाद उसका क्या होता है, थोड़ा सा पैरालिसिस टाइप का होता है वो मसल, वो वर्म को, और वो वर्म इंटेस्टाइन में चिपक के नहीं बैठता, वो निकल जाता है नीचे. सो दैट इज हाउ levamisole will act as a vermifuge, not a vermicide. So it is a vermifuge. So it will block the neuromuscular transmission in the worms, particularly acting on a ganglionic nicotinic acetylcholine receptor at a neuromuscular junction. That is nothing but the stimulation produces, उसका mechanism क्या है, it will stimulate the acetylcholine receptor and it will produce persistently hyperpolarization or polarization, depolarization. That is known as a hyperpolarization. Okay, so persistent hyperpolarization resulting in the muscular contraction and paralysis of muscle of worms. Okay, and also interfere with the metabolism of carbohydrate. That's how it will remove the worms from your intestine. So adverse effect of this levamisole includes routine adverse effect like normal adverse, nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea, drowsiness, giddiness. That is, it is not much important. Just remember the mechanism of action and this part. Then it is used in the ascariasis, that is an infection caused by ascariasis. Anicyclostomasis. So it is their use. Now next drug is a parental palmioid. So it is also, it has a depolarizing neuromuscular blocking action and causes spastic paralysis of worms. मतलब वही कि persistently depolarize करेगा जो worms का मसल है, उसको कंटिन्यूसली उसको स्टिमुलेट करेगा, डिपोलराइजेशन हो जाएगा उसका, और उसमें स्पास्टिसिटी आ जाएगी, मतलब फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा मसल, स्पास्टिक हो जाएगा, और वो वर्म्स वहां से होल्ड नहीं कर पाएगा इंटेस्टाइन में उसको. मतलब वो क्या करते हैं, वर्म्स क्या है कि इंटेस्टाइन में चिपक के रहते हैं, अटक के रहते हैं, लटक के रहते हैं. तो लटकने के लिए उनको क्या चाहिए, वो मसल जो है, वो मसल लटकने के लिए वो मसल का यूज करते हैं. लोकोमोशन जो है उसका मसल की वजह से होता है. तो मसल को पैरालिसिस हो गया उनका, तो वो निकल जाएंगे नीचे, लैट्रिन में आ जाएंगे आपके. ठीक है. So anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain, then skin rash. These are the common adverse effects. Then along with the increased SGOT, serum glutatiate oxaloacetate transferase enzyme का level, मतलब थोड़ा बहुत hepatitis वगैरह भी करे. Then it is also used in the ascariasis and enterobiasis. Then next drug is a pyrazine or piperazine. Sorry. Next drug is a piperazine. So again it will act on a site like neuromuscular transmission. Then it will act as a GABAergic neurotransmitter at neuromuscular junction. मैंने पहले ही बोला कि आपका ह्यूमस में क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वहाँ पे सिर्फ एसिटिलकोलिन का ही इन्फ्लुएंस होता है, गाबा का कोई रोल नहीं रहता. जो गामा अमाइनोपेप्टाइड एसिड है ह्यूमंस में सिर्फ ब्रेन में होता है. इट इज इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन द ब्रेन ऑफ ह्यूमन, बट दिस गाबा इज नॉट प्रेजेंट इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ह्यूमंस के पेरिफेरल में ये नहीं होता है, ये सिर्फ वर्म्स के पेरिफेरल में होता है. तो वर्म्स में क्या होता है कि वर्म्स में दोनों भी होता है, ये गाबार्जिक रिसेप्टर भी होता है वहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, और एसिटिलकोलिन का भी होता है. एसिटिलकोलिन का स्टिमुलेटरी इन नेचर होता है, गाबा का इनहिबिटरी इन नेचर होता है. तो ह्यूमंस में दैट्स व्हाई दिस पायराजेपिन विल नॉट शो मच एडवर्स इफेक्ट इन द ह्यूमंस. ठीक है. जितने भी एंथाल्मेंटिक ड्रग्स है, सो दे आर नॉट एबल टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर
or they will not show any CNS or other adverse effect. That's why they can selectively act on your helminth, or they can selectively act on worms. Site is nothing but neuromuscular transmission, GABA receptors at neuromuscular junction, and it will act by GABA receptor agonism. So it will act as a GABA receptor agonist and causes hyperpolarization and flaccid paralysis of muscle of worm. That's why the worm is not able to hold itself in the intestine, and the worms will be expelled out during the defecation. That's how piperazine will act. So common adverse reaction include urticaria, skin rash, vertigo, chakrana, muscular incoordination, hypotonia, ataxia, blurring of vision, arc measure होना. It is a safe drug during pregnancy. So it is used in the treatment of ascariasis in the adults, also enteroamoebiasis उसमें भी यूज करते हैं. Then it is also used for the roundworms. उसमें इतना ही important है. उसका maximum क्या important है? Mechanism of action. Then next drug is ivermectin. So it is obtained from Streptomyces evermictilus. Streptomyces evermictilus. So it is the ivermectin obtained from Streptomyces evermictilus. Actually, the macrocyclic lactone. There is a macrocyclic lactone in the structure, बड़ा वाला lactone रिंग रहेगा ivermectin के साथ. तो उसका साइड क्या है? It will act on a neuromuscular transmission as well as glutamate gated chloride channel at the neuromuscular junction in invertebrate. Invertebrate मतलब क्या? अपन क्या है? इंसान क्या है? वर्टिब्रेट्स. तो इनवर्टिब्रेट्स मतलब क्या? कि जिसमें वर्टिबल कॉलम नहीं है. तो कौन आता है जिसको वर्टिबल कॉलम नहीं है? वही वर्म्स वगैरह, जर्म्स वगैरह, वही आता है. न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, इट विल अफेक्ट द न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन as well as glutamate gated chloride channel at the neuromuscular junction of worms or parasites. So mechanism of action includes it will cause a tonic paralysis of micropillary, which is the organ for attachment of your worms in the intestine, which are then immobilized and phagocytosized by ER cells. तो इसके बाद क्या होगा कि जो इजीली फैगोसाइट या इजीली एनगल्प कर देगा आपका ह्यूमंस का जो भी डिफेंस सिस्टम है उसका. Tonic paralysis, that will be, it will cause tonic paralysis to the micropillary. Micropillary is a organ of locomotion, and which is then immobilized. तो immobilized मतलब वो मूव नहीं कर पाएगा और उसकी वजह से इजीली फैगोसाइटोसाइज हो जाएगा ER सेल से. इंटेस्टाइन में जो सेल्स होते हैं फैगोसाइटिक सेल्स. It has an adverse effect of ocular inflammation which may leads to blindness, itching. So it has a specific adverse effect. It can cause blindness. It can cause ocular inflammation and blindness. Then itching, then skin edema, arthralgia and headache. So it is used to treat onchocerciasis. It is used to treat onchocerciasis. They are nothing but the infections. Just forget about it. Then again it is used to treat lymphatic filariasis, intestinal nematode infections, then scabies मतलब scabies का जो infection होता है. Okay. Then head lice मतलब आपका जो बाल में आता है lice. हेड लाइस के ट्रीटमेंट के लिए भी इवरमेक्टिन यूज करते हैं. इसका अवेलेबल है शैम्पू. अगर आपको बालों में जुए हो गए तो उसमें इवरमेक्टिन का शैम्पू यूज करते हैं. देन मेट्रिफोनाइट इज अनदर ड्रग. एक्चुअली इट इज अ organophosphorus or it is a pesticide, metriphonates. So organophosphorus insecticide, it is a insecticide. Organophosphorus insecticide, it is a prodrug. It is converted into active metabolite in the body, that is dichlorowas. So metriphonates is converted into dichlorowas. Remember, dichlorowas is the active metabolite of metriphonate, and the activity is due to this dichlorowas. So it will act on acetylcholine esterase. Obviously, as it is a organophosphorus compound, it will inhibit the acetylcholine esterase. After inhibition of acetylcholine esterase, there will be more amount of acetylcholine available at the neuromuscular junction of worms. So acetylcholine will do its work. So it will continuously cause contraction. Okay. So inhibition of acetylcholine esterase causing muscular contraction. Okay. And that is after that there is paralysis of the worm, not to human. Then GI disturbances, weakness and dizziness, vertigo. These are the adverse effects. So it is used in the treatment of hemato. Is nothing but the organophosphorus compound, and it will cause inhibition of acetylcholine esterase of the worms, so that there will be contraction. There will be more acetylcholine available at the neuromuscular junction of worms, and it will cause paralysis.
The next drug is a praziquantel. Next drug is a praziquantel. So it will act on a cell membrane of earworms. So it will increase the calcium influx inside the cell, leads to muscular contraction. Continuous muscular contraction leads to paralysis of the muscle of the worms. It is a drug of choice in tiniasis. Drug of choice in tiniasis. The next one is mebendazole. Now this is important. They might ask question on this. Mebendazole, albendazole, and related compound. Okay, mebendazole, albendazole, related. They are nothing but the base imidazole derivative. They are the base imidazole derivative. So they will act on a microtubules in the cytoskeleton. See, every cell has a cytoskeleton. But little bit there is a little bit difference between our eukaryotic cell and prokaryotic cell. So that's why this mebendazole, albendazole will selectively act on a worms, not on a human cell. Okay. So they will block the transport of secretory granules and movement of other subcellular organelle, and they will arrest the microtubules. They will arrest the microtubules of worms, and because of that, that microtubule will not be able to utilize our glucose for the energy, and that's why the without energy the worms will die. That is the mechanism of action of its mebendazole albendazole. They have adverse effect of abdominal pain, nausea, diarrhea. In large doses, they may cause vertigo, dizziness, headache, etc. Arthalgia. It is also teratogenic in humans. It is teratogenic in animals. It is used in the ascariasis, enterobiasis, trichuriasis, in hydrated disease. Then it is a broad spectrum anthelmentic drug. So it is a broad spectrum. It is active against variety of worms. Then next one is the nucleosamide. So its site is in the mitochondria, and mechanism includes inhibition of aerobic phosphorylation of ADP, leading to death of microorganism. Rest of things are not important. Next drug is diethyl carbamazine citrate or DEC. It is a piperazine derivative diethyl carbamazine citrate. So it acts by sensitizing the micropillary so that they become susceptible for phagocytosis and they are trapped by pigs रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लीवर. तो ये क्या करेंगे, ये माइक्रोपिलरी जो होता है ऑर्गन इसका वर्म्स का, तो उसको क्या करेंगे सेंसिटिविटी बढ़ा देंगे. इसके लिए अपने बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए, तो बॉडी के डिफेंस फैगोसाइटिक सेल जो है वो उसको एनगल्फ कर लेंगे और डाइजेस्ट कर देंगे. बाद में वो ट्रैप कर देंगे उसको इन द रेटिकुलोएंडोथेलियल सेल्स. लीवर के सेल्स होते हैं, लीवर के सेल्स उसको डाइजेस्ट कर देंगे. Then adverse effect like anorexia, nausea, vomiting, diarrhea, then headache, allergic reaction, so tachycardia, lymphadenopathy, आपका जो lymph है उसका size बढ़ जाएगा, muscular pain, arthalgia. So it is also used in the filariasis, filarial prophylaxis, prevention of filarial, topical eosinophilia and Lopers syndrome. याद रखो ये Lopers syndrome, drug used in the Lopers syndrome. Then there are some few drug of choice over here. So in case of roundworm, hookworm, and pinworm, so mebendazole and albendazole, these are the drug of choice in case of roundworm, hookworm, pinworm. Then in case of whipworm, mebendazole is a drug of choice. In case of threadworm, ivermectin is a drug of choice. In case of pork roundworm, albendazole is the drug of choice. Lymphatic filarial worm infection, diethyl carbamazine citrate. Ocular filariasis, ivermectin is a drug of choice. And guinea worm or guinea worms, so metronidazole is a drug of choice. In case of trematodes, all kind of flukes like blood flukes, liver flukes, Chinese liver fluke, giant intestinal fluke, lung fluke, so all kind of flukes, praziquantel is a drug of choice. Then praziquantel is also drug of choice in case of all type